Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we have started reading with our chapter number 7 from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Necklace, right? So we were reading the story of Matilda, and in the previous video we have read that she is all set to go for the royal party with a very pretty dress, and she is also having a diamond necklace that she has borrowed from one of her rich friend. Okay, so now what will happen next, we will come to know. So let's continue the chapter. She fell upon the neck of her friend, embarrassed her with passion, then went away with her treasure. Okay, so when her rich friend, okay, now when she said that yes, she can borrow the diamond necklace, so she was so happy, she was so excited that she fell upon the neck of her friend, okay, and she embraced her. Embrace means to hug. Okay, so she hugged her friend with passion. Okay, so this was the hug full of love, okay, full of gratitude in fact, and then she went away with her treasure. Okay, so what is this treasure? This is the diamond necklace. Okay, the day of the ball arrived, and now finally the day of the ball, the day of that royal party, that grand party, now finally the day had arrived. Madame Loisel was a great success, and to this party Madame Loisel, that is Matilda, she was having a great success. Why? She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. Okay, why she was having a great success? Because in the entire party she was the prettiest of all. Okay, so she was a pretty lady, she was very young, she was pretty, and in that party she was having the pretty dress and a diamond necklace, so she was looking really very pretty. Okay, she was elegant, she was gracious, she was smiling and she was full of joy. Okay, she was full of joy because now finally उसका जो ड्रीम था, राइट, जिस तरह की लाइफ वो हमेशा चाहती थी अपने लिए, नाउ फाइनली शी वाज हैविंग दोज मोमेंट्स, राइट, वो इस तरह की लाइफ, इस तरह की रॉयल पार्टीज में जाना, इस तरह की लैविश पार्टीज में जाना वो हमेशा से चाहती थी, राइट, इस तरह की जो उसका ड्रीम था, फाइनली शी वाज हैविंग हर ड्रीम, और इसलिए शी वाज फुल ऑफ जॉय. ओके, all the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. Okay, so because she was looking so pretty in the party, that all the men who were there in the party, all the men noticed her. Okay, they noticed her presence, they asked her name, they inquired about her, that who is she. Okay, and they all wanted to be presented. Okay, she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. Okay, and throughout the party she was dancing with enthusiasm. Enthusiasm means energy. Okay, so she was full of energy, she was full of joy, and with that energy, with that joy, she was dancing there, and she was intoxicated. Intoxicated means to lose control. Okay, she was not having any control over her body, and she was having a lot of pleasure. Okay, and she was thinking of nothing, okay, but all this admiration. Okay, so now in her mind there was no other feelings, no other thoughts were there in her mind, and she was thinking about this party, about this admiration that she was having. Okay, so उस पार्टी में जितने भी लोग थे, they were admiring her, they were admiring कि वो किस तरह लग रही थी. She was looking so pretty, her dress was so pretty, and she was having the diamond necklace, so everyone was admiring her. Okay, और वो इस admiration को कभी भी भूलना नहीं चाहती थी, and this admiration was there in her mind. Okay, this victory so complete, and for her ये जो victory थी finally, जो victory क्यों, क्योंकि because वो हमेशा से यही चाहती थी, and now finally she was having these moments in her life, so this was a victory for her, right. और ये जो victory थी, this was so complete, this was so sweet for her, to her heart, right. She went home towards 4 o'clock in the morning. Okay, so she enjoyed the party. Actually she enjoyed the party very much, और उसको पार्टी में इतना अच्छा लग रहा था. She was having a great time in the party that she went home towards 4 o'clock in the morning, right. वो पार्टी से जाना नहीं चाहती थी because उसको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, और वो पार्टी में मॉर्निंग में 4 o'clock तक रहती है. Her husband had been half asleep in one of little saloons since midnight with 3 other gentlemen
gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. Okay, so now Matilda, she was enjoying the party, she was dancing, she was having a lot of fun. और जो उसके husband थे, उसके husband क्या कर रहे थे, her husband had been half asleep in one of the little saloons. Saloons means जो rooms थे वहाँ पे किसी एक रूम में उसके हस्बैंड जो थे वो पार्टी में उन्होंने स्टार्टिंग में जो इन्जॉय किया था, बट जब मिडनाइट हो गई थी देन ही वाज फीलिंग स्लीपी डैट, तभी वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो छोटे छोटे से सलून्स बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे, वैसे रूम में चले जाते हैं विथ 3 अदर जेंटलमैन एंड ही वाज नॉट अलोन. 3 अदर जेंटलमैन वर ऑल्सो देयर हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच. ओके, और ये जो 3 अदर जेंटलमैन थे ये और जो मटिल्डा के हस्बैंड थे, इन चारों की जो वाइफ्स थी वो क्या कर रही थी, वो पार्टी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी. और इसीलिए जो इनके हस्बैंड थे राइट, वो इस रूम में आ गए थे मिडनाइट से, वो यहाँ पे सो रहे थे, जबकि इनकी जो वाइफ्स थी दे वर एंजॉइंग इन द पार्टी राइट. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. Okay, so now it was 4 a.m. 4 in the morning and now it was time to go back home. So when they were going back home, so Matilda के जो husband थे वो क्या करते हैं, he threw around her shoulders the modest wraps. Okay, modest means that is quite small or that is quite limited. Okay, and what is wraps? Wraps in this picture we can see जो इस तरह से shoulders को wrap करने के लिए जो एक cloth होता है that is called wraps. Okay, so इस तरह का जो wrap होता है वो उसके shoulders पे डाल देते हैं, शोल्डर्स को कवर करने के लिए, बिकॉज आउटसाइड काफ़ी ठंड है. ओके, अब जब ये बाहर जा रहे हैं तो उसके हस्बैंड उसको कवर कर देते हैं, उसके शोल्डर्स पे उस एक तरह का रैप डाल देते हैं. और ये जो रैप है ये बहुत मोडेस्ट था, मोडेस्ट यानी बहुत चीप था, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं था. दे हैड कैरिड, और ये रैप ये अपने घर से लेकर आए थे. हुज पोवर्टी, और ये जो रैप था इसकी जो पोवर्टी थे, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट वॉज क्वाइट चीप. सो इसकी जो पोवर्टी थी दैट वॉज क्लैशिंग विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम राइट. अब मैटिल्डा ने जो बॉल कॉस्ट्यूम पहनी थी, जो ड्रेस पहनी थी इस पार्टी के लिए, दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव राइट. और जो उसका रैप था वो बिल्कुल नॉर्मल था, जो वो हमेशा से पहना करती थी जिस तरह के कपड़े. तो अब जो उसका रैप था दैट वाज नॉट मैचिंग विद द एलिगेंस ऑफ हर बॉल ड्रेस. ओके, she wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. Okay, so जब मटिल्डा के हस्बैंड ने उसको कवर किया, उस रैप को उसके शोल्डर्स पे रखा, सो मटिल्डा क्या चाहती थी, she wanted to hurry away, वो जल्दी से वहाँ से बाहर जाना चाहती थी, in order not to be noticed by the other women, ताकि जो वहाँ पे बाकी वुमेन है वो उसको नोटिस ना कर लें, वो उसको देख ना लें. और ये जो अदर वुमेन थी what they were doing, they were wrapping themselves in rich furs. Okay, so वो भी अपने आप को कवर कर रही थी रैप से, पर उनके जो रैप्स थे वो कैसे थे, they were made of rich furs. Okay, so ये भी जो रैप है फर का बना हुआ है, so उनके पास काफ़ी इस तरह के फर के बने हुए काफ़ी रिच काफ़ी एक्सपेंसिव रैप थे, वो उनसे अपने आप को कवर कर रही थी. तो ऐसे में मटिल्डा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो मटिल्डा के रैप को देख लें कि वो कितना चीप है, कितना नॉर्मल सा है राइट. सो वो जल्दी से वहाँ से बाहर जाना चाहती थी. Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. Okay, so उसके हस्बैंड ने जब देखा कि जल्दी बाहर जा रही है, so he detained her. Detain means to stop. So he stopped her and he said, wait, I am going to call a cab. Okay, so वो कहते हैं wait, stop, because I am going to call a cab, then only we will go. But she would not listen and descended the steps rapidly, right? But Matilda, she was not having this intention to listen to her husband, and she descended the steps rapidly. Descend means to move downwards, right? So Matilda वहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहती थी, वो कैब के आने तक वहाँ वेट नहीं करना चाहती थी अपने रैप को अपने शोल्डर्स पर डाल के. सो वो बिल्कुल नहीं सुनती है, एंड रैपिडली मीन्स हरिडली वो क्या करती है, जो वहाँ के स्टेप्स थे उनको वो डिसेंड कर जाती है, डाउन स्टेयर्स वो आ जाती है, बाहर स्ट्रीट पे रोड पे वो आ जाती है राइट. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. Okay, so now finally they are in the street and there were no carriage. Carriage in this picture we can say this is the carriage. Okay, and it is pulled by horse. Okay, so इस तरह का जो carriage था वो वहाँ पे उनको एक भी नहीं मिलता है. And they were looking for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. Okay, and they were hailing means calling. They were calling the coachman. Okay, what is coachman? Coachman is the person right जो यहाँ पे बैठता है, उस तरह के कैरेज को वो चलाता है. सो वो कोचमैन को बार बार बुला रहे थे,
एक ऐसा कोचमैन whom they saw at a distance. Okay, they walked along toward the river, okay, but they were unable to find a single carriage that time, so they started walking and they were walking along toward the river, okay, hopeless and shivering, and they were totally hopeless, okay, they were not having any hope कि उन्हें इस टाइम कोई carriage मिलेगा, and they were shivering. Why? Because it was so cold outside that they were shivering because of cold. Okay, finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. Okay, so they were walking, but finally after a long time they were able to find one of those old carriages. Okay, finally उनको एक बहुत old carriage मिल तो जाता है, but वो इतना पुराना था और ऐसा था जो कि पेरिस में उन्हें आफ्टर नाइटफॉल ही दिखाई देता है। कैसा पुराना सा कैरेज उन्हें मिल जाता है, बट उनके लिए वही इनफ था और वो उसको हायर कर लेते हैं। ओके, It took them as far as their door and they went weirdly up to their apartment. Okay, और ये जो old carriage था ये उनको उनके डोर तक, उनके घर तक ले आता है, और घर आने के बाद वो क्या करते हैं, they went weirdly. Weirdly means tired. Okay, so they were so tired and it was 4 in the morning, right? So now they were so tired, they were so sleepy and they went up in their apartment. It was all over for her. Okay, और मटिल्डा के लिए इतना बहुत था, she was so happy. उसकी पूरी लाइफ का जो ड्रीम था, जो भी उसकी विशेष थी, जिस तरह की लाइफ वो चाहती थी, राइट, फाइनली उसने उस तरह की लाइफ कुछ टाइम के लिए एंजॉय की थी. सो नाउ शी वॉज ऑल हैप्पी, शी वॉज सो सेटिस्फाइड. और ओके, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. Okay, so now Matilda is still having those moments in her mind. Okay, still वो उन्हीं moments को याद कर रही थी and she was so happy. और जहाँ तक उसके husband की बात है, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. Okay, उसके जो husband है वो काफ़ी realistic है, वो real life में रहते हैं और उनको पता था कि वो पार्टी जो है वो end हो चुकी है, and now by 10 o'clock he has to go to his office. Okay, she removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Okay, and now Matilda, what she was doing, she was removing the wraps. Okay, जो उसने वो पुराना सा रैप पहना हुआ था अपने शोल्डर्स पे, अब क्योंकि वो इनसाइड द हाउस थे, सो नाउ शी कैन रिमूव द रैप. सो वो अपना रैप हटा लेती है अपने शोल्डर्स पे से बिफोर द ग्लास, एंड शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द मिरर बिकॉज शी वॉन्टेड टू हैव अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. ओके, सो वो चाहती थी कि वो अपने आप को एक बार फिर से मिरर में देखे, अपने नेकलेस को, अपनी ड्रेस को, अपनी ग्लोरी को, अपने अपीयरेंस को एक बार फिर से देखना चाहती थी. सो वो फिर से मिरर के सामने खड़ी हो जाती है. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. ओके, वो जैसे ही वो अपने शोल्डर्स पे से अपना रैप हटाती है, तभी सडनली शी अटर्ड अ क्राई. Her necklace was not around her neck, and what was the reason? Why did she cry? She cried because her necklace was not there around her neck. Okay, necklace नहीं था, तो necklace कहाँ गया? Let's see. Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" Okay, so Matilda cried so loudly that उसके जो husband थे, okay, who was already half undressed. Undressed means he was changing the clothes. Okay, वो अपने अपनी ड्रेस चेंज कर रहे थे, तो उन्होंने हाफ ड्रेस चेंज कर ली थी. सो मटिल्डा इतनी लाउडली क्राई करती है कि उसके हस्बैंड पूछते हैं व्हाट इज द मैटर. शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. ओके, सो मटिल्डा जो थी शी इज एक्चुअली वेरी वरीड, actually very disturbed, and she turned towards her husband excitedly. Okay, I no longer have Madame Forrester's necklace. And finally she disclosed that what is the matter. Okay, and finally she said that I no longer have Madame Forrester's necklace. Okay, he aroused in dismay. What? How is that? It is not possible. So this is really very big news for her husband, and he aroused in dismay. Okay, and he said, what are you saying? How is that? It is not possible. Okay, and they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. Right? So ये एक्चुअल में बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा इनके लिए बात है कि इतना एक्सपेंसिव डायमंड का नेकलेस, जो कि एक्चुअल में इनका था भी नहीं, जो मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड से बोरो किया था, वो नेकलेस खो चुका है. मटिल्डा इज़ नॉट हैविंग दैट नेकलेस. वो नेकलेस कहाँ चला गया? शी वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया. सो वो दोनों क्या करते हैं? नाउ दे वर लुकिंग एवरीवेयर फॉर द नेकलेस
इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, राइट, जो ड्रेस थी उसमें देखते हैं कहीं ड्रेस में तो नहीं गिर गया. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक इज दैट रैप, ओके, इन द पॉकेट्स एवरीवेयर दे लुक फॉर दैट बट दे वर अनेबल टू फाइंड इट. ओके, he asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? So now next question of Matilda's husband was, he asked Matilda that if she was sure that जब वो मिनिस्टर्स के घर से निकले थे, जब वो पार्टी से निकले थे, तब क्या उसके गले में वो नेकलेस था. ओके, वो जो पूछना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी वाली जगह पे ही नेकलेस निकल के गिर गया हो. yes, I felt it as we came out. So Matilda answers that yes, जब हम पार्टी से निकले थे, at that time she was having that necklace because she was able to feel it at that time. okay, so वो पार्टी में तो नहीं रहा है, पार्टी से निकलने के बाद और घर आने से पहले तक वो कहीं पे गिर चुका है. okay, but if you had lost it in the street we should have heard it fall, it must be in the cab. okay, so now Matilda's husband, he said that okay, अगर तुम श्योर हो कि पार्टी से निकलने तक वो था तुम्हारे पास, then it's okay, but if you had lost it in the street, so उसके पास में we have read that they were walking in the street, right, so her husband said that if you had lost it in the street then we should have heard it fall. okay, so अगर ये स्ट्रीट में कहीं खोता so उसके गिरने की आवाज़ आती. it must be in the cab. so finally her husband concluded कि वो जो नेकलेस है वो कहाँ होना चाहिए, it must be in the cab, वो कैब पे कहीं निकल के गिर गया है. yes, it is possible, did you take the number? so now Matilda, she was also convinced with this fact, with this guess, and she said that yes, it is quite possible that वो कैब में ही गिर गया है. and then she asked to her husband that did you take the number of the cab? no, and you, did you notice what it was? then Matilda's husband, he replied that no, he didn't take the number. and then he asked Matilda that if she noticed what the number was. no, then Matilda also replied no. okay, they looked at each other utterly cast down. okay, so now they both were very cast down, they were so sad, they were so full of sadness, full of dismay, and they were looking at each other. okay, finally Loisel dressed himself again, and finally जो Matilda के husband थे Mr. Loisel, finally he dressed himself again. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. okay, so finally Matilda के जो husband है वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ नेकलेस को ढूंढने के लिए. कहाँ पर? ओवर द ट्रैक, उस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ जहाँ पे दे वर वॉकिंग. ओके, जहाँ पे वो चल रहे थे, जहाँ पे वो चलते हुए आए थे, हमने पढ़ा था रिवर के किनारे. सो ही सेड दैट आई एम गोइंग ऑन दैट ट्रैक टू सी दैट इफ आई एम एबल टू फाइंड द नेकलेस ओवर देयर. ओके, and he went. okay, after saying this, finally Matilda's husband went out to find the necklace. okay, she remained in her evening gown, not having the force to go to bed. okay, Matilda was at home, she was waiting for her husband. okay, and she was still in her evening gown, right, जो उसकी पार्टी की कॉस्ट्यूम थी, she was still in her evening gown, उसने अपनी कॉस्ट्यूम चेंज नहीं की थी, because she was not having the force to go to bed, because she was actually very worried, right, because उसने अपनी rich friend का necklace खो दिया था. so obviously she was very worried and she was not having the force to go to bed, right, वो इस तरह से ड्रेस चेंज करके सोने नहीं जा सकती थी, because she was full of anxiety, she was so anxious, she was so worried. okay, towards 7 o'clock her husband returned, he had found nothing. okay, and almost 7 o'clock in the morning जो उसके husband है वो आ जाते हैं और वो क्या कर पाए थे, he was unable to find the necklace. okay, he went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. okay, so जहाँ जहाँ ये चल के आए थे वो हर जगह चले जाते हैं, but he was unable to find the necklace. so अब वो क्या करते हैं, then he went to the police. okay, वो पुलिस में भी रिपोर्ट करते हैं, and he went to the cab offices, ये पता करने के लिए कि क्या किसी कैब ड्राइवर ने बताया है कि कोई नेकलेस मिला है, क्या किसी ने नेकलेस उन्हें अपने ऑफिस में दिया है. so he also inquired in the cab offices and he also put an advertisement in the newspaper. okay, and he also offered a reward, right, वो advertisement देते हैं न्यूज़पेपर में about the lost necklace, and वो ये भी कहते हैं कि जो ये नेकलेस जिसको मिलेगा और जो इसको वापस करेगा उससे एक रिवॉर्ड मिलेगा. इस तरह की भी वो बात वो एडवर्टाइजमेंट में ऐड करवाते हैं. she waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. okay, so अब जो उसके हस्बैंड है वो each and every way that he was having, he was trying all the ways, right, और जब
मटिल्डा है, शी वॉज वेटिंग ऑल डे एंड शी वॉज इन द स्टेट ऑफ bewilderment मीन्स कन्फ्यूजन. ओके, सो शी वॉज सो कन्फ्यूज, वो भी समझ नहीं पा रही थी कि नेकलेस कहाँ चला गया, कहाँ जा सकता है और कैसे मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, राइट. सो शी इज़ फुल ऑफ bewilderment, शी इज़ फुल ऑफ confusion and she was just waiting. Okay, Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. Okay, and finally in the evening जो लॉइजल है उसके हस्बैंड वो आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला. इतने एफर्ट्स करने के बाद पे भी पुलिस में कंप्लेन कर दिया, कैब ऑफिस में चले गए, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, बट स्टिल ही वॉज अनेबल टू हैव अ सिंगल क्लू अबाउट द नेकलेस. ओके, he said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. So now finally Mr. Loisel, now he was having this option, this idea, and he told Matilda that you can write to your friend. Okay, you can write one letter to your friend, and in that letter you have to write that you have broken the clasp of the necklace. What is clasp? Clasp in this picture we can say this is the clasp of the necklace, right, जहाँ पे नेकलेस को हम आपस में टाई करते हैं दोनों एंड को. सो उसने कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को लेटर में ये लिख दो कि तुमसे बाय मिस्टेक जो नेकलेस का क्लैप्स होता है वो टूट गया है, राइट, एंड तुम उसको रिपेयर करवा रही हो, तुम ऐसा करके अपनी फ्रेंड को लिख दो. डेट विल गिव अस टाइम, शी रोट एज ही डिक्टेटेड. ओके, सो वो कहते हैं कि तुम इस तरह से एक लेटर लिख दो. सो ऐसे में हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा और नेकलेस को ढूंढने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा. सो मटिल्डा वैसे ही कहती है जैसे उसके हस्बैंड ने कहा, और वो एक्चुअल में एक लेटर लिख देती है. उसके हस्बैंड जो थे ही वॉज डिक्टेटिंग एंड Matilda actually wrote one letter to her friend. Okay, so ये हर तरह के efforts कर रहे हैं कि कैसे भी करके नेकलेस मिल जाए, बिकॉज वो नेकलेस इनका नहीं है, इन्होंने अपनी फ्रेंड से बोरो किया है, सो इनको रिटर्न तो करना ही है. ओके, सो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं नेकलेस को ढूंढने के लिए. At the end of a week they had lost all hope. Okay, so finally 1 week का टाइम हो जाता है. 1 week तक पुलिस को भी नहीं मिलता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के बाद भी किसी को नहीं मिलता है, कोई भी क्लू नहीं मिलता है. सो आफ्टर 7 days, आफ्टर 1 week, फाइनली दे लॉस्ट ऑल होप. अब उनको लगता है कि ये नेकलेस इनको नहीं मिलेगा, इन्होंने वो नेकलेस अपने से खो दिया है. And Loisel, older by 5 years, declared. Okay, and Mr. Loisel, husband of Matilda, who was 5 years older than Matilda, so finally he declared, we must replace this jewel. Okay, so finally वो कहते हैं कि वो नेकलेस हमसे खो गया है, so अब हमें उस नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा. अब हमें उसकी जगह दूसरा नेकलेस लाके मैडम फॉस्टर को देना पड़ेगा, बिकॉज हमने उनका नेकलेस खो दिया है, राइट. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. Okay, so finally अब वो बात से कन्विंस है कि उन्हें एक दूसरा नेकलेस लाना पड़ेगा और उस नेकलेस से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट. सो वो कहाँ जाते हैं? They went to a shop of the Palace Royal, right. सो कोई ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ वो जाते हैं, and in that shop they were able to find a chaplet of diamonds. Okay, chaplet is also necklace. So finally वहाँ पे उनको एक नेकलेस मिल जाता है डायमंड्स का बना हुआ, और उसकी जो डिज़ाइन थी, उसका जो पैटर्न था, राइट, दैट वाज एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. ओके, सो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनसे खो गया है, बिल्कुल वैसी डिज़ाइन का वो, वैसी पैटर्न का वो नेकलेस था. ओके, इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs. Okay, so it was a diamond necklace, so obviously it was very expensive. And what was the cost? It was of 40,000 francs. Okay, they could get it for 36,000. Okay, and they were offering some discount, or after discount they were able to get it for 36,000, right. So this is actually a very big amount, okay, for Matilda and her husband, because we have read in the chapter कि वो कितनी average family थी, कितनी middle class family थी, and for them 36,000 is really a very very big amount for them, right. But actually they have lost the necklace, so they have to replace it, right. And for that this is a very big amount जो कि उनको पे करना पड़ेगा. Okay, so now what will happen next? क्या एक्चुअल में नेकलेस खरीद के उसको रिप्लेस करते हैं, और they will find some other option. Okay, so we will come to know when we will continue the chapter. So see you in the next video. Thank you.